Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining. Welcome by Atom Camp and City at LUMS. So City at LUMS जो है वो एक इनिशिएटिव है, LUMS में स्टार्ट हुआ है. City जो है वो एक्रोनिम है for Center for Urban Informatics, Technology and Policy at LUMS. और इनका जो है वो एक इनिशिएटिव है जो HEC से ग्रांट के साथ काम कर रहे हैं और उसमें दे आर फोकसिंग ऑन अर्बन टेक. और एटम कैंप और सिटी एट लम्स जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप भी की हुई है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स पे. वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ फ्यू थिंग्स. सो वेलकम टू एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ सिटी एट लम्स एंड एटम कैंप. सो आज डॉक्टर मोमिन उपल ने हमें ज्वाइन किया है. ही इज चेयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट लम्स और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इस इनिशिएटिव के. सो उनका लंबा तारुफ हमने वेबसाइट पे काफ़ी लंबा सारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए आई वोंट स्पीक about his long introduction. So you can go and connect with him on LinkedIn. डॉक्टर साहब जो है वो हमारी जो डिस्कशन आपसे भी हुई थी और इस वेबिनार में भी फोकस, पहले तो आप एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन कर लें और उसके बाद फिर विल लुक फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस by the participants. So what we want to understand के AI and data science की सिटी मैनेजमेंट में एप्लीकेशन क्या है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और अगर आप बाहर भी रिफर करना चाहें जनरली तो वो भी बता दें ग्लोबली कैसे अप्लाई हो रही है. तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंस एंड एआई. तो ऑफ्टन इन पाकिस्तान पीपल से कि ये शायद हमारे बस की बात नहीं है या ये बहुत एडवांस बातें हैं, हमारे अभी बड़े बेसिक मसले हैं. लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वही बेसिक मसले हल करने के लिए वी नीड टू गो फॉर दीज थिंग्स, बट वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स आफ्टर योर प्रेजेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन जिसमें आप अपना आइडियाज प्रेजेंट करें एआई एंड डेटा साइंस फॉर सिटी मैनेजमेंट. उसके बाद हम Q&A सेशन करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू नवीद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. सो नवीद इस कर लेते हैं. सो वी कैन स्पेंड अबाउट 30 मिनट्स ऑन दी स्लाइड्स. और अगर मैं इफ आई एम स्पिलिंग ओवर तो मैं उसमें यूज केसेस में डिवाइड किया हुआ, तो आई कैन स्किप ओवर सम ऑफ दोज सो दैट आई थिंक थोड़ा सा टाइम अगर हम निकाल लें थोड़ा सा डिस्कशन के लिए, खासतौर पर आपने जैसे कुछ पॉइंट्स रेज किए, आई थिंक दैट वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल. और दूसरा ये चीज़ कि अभी नवीद साहब ने मुझे कहा कि जी आपने प्रोफेसर होके नहीं समझाना, सो थोड़ा सा सिंपल करके करना है, तो आई एम गोना ट्राई टू डू दैट. अब ये लेकिन चीज़ें बड़ी रिलेटिव होती हैं. मेरे नज़दीक जो शायद चीज़ें सिंपल हों, मे बी ऑडियंस के लिए शायद उतना सिंपल ना लगे. तो इफ़ बाय एनी चांस यू फील कि यार नहीं ये चीज़ें ऊपर से गुजरी हैं, तो बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं शायद खुद ही से उसको मॉडरेट करने की कोशिश कर लूँगा. अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई विल नॉट टेक देम, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम एज वेल. तो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ. मेरा इंट्रोडक्शन वैसे नवीद ने कर दिया. तो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद व्हाट द ग्रैंड चैलेंजेस. मैं कुछ आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स सिर्फ दूंगा अपने हमारे शहरों के बारे में, इन पर्टिकुलर अबाउट द सिटी ऑफ लाहौर. सो एक तो सबसे पहली चीज़ है, मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ. राइट. सो अगर हम जो है फॉर एग्जांपल लाहौर की सिर्फ बात करें तो इन द पास्ट अबाउट 20 years आवर बिल्ट अप एरिया इन लाहौर हैज़ इंक्रीज 4-fold. और वो जिस तरह इंक्रीज किया है टोटली बिन अनप्लान्ड, जिसकी वजह से इतने मसाइल ऐसे हैं जो हम जिसका रोज़ सामना करना पड़ता है. और इस्लामाबाद इज़ नॉट डिफरेंट. इफ माय ऑडियंस इज प्राइमरली फ्रॉम इस्लामाबाद, तो आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एज वेल. जो कि एक्चुअली जो नीचे तस्वीर है वो एक्चुअली इस्लामाबाद की है. जो सेंटोरस एक्चुअली मेरे ख्याल में यूफोन सेंटोरस की बिल्डिंग्स हैं. और जो है उसके साथ ही आपको एक वो इनफॉर्मल सेटलमेंट एक स्लम नज़र आ रहा है. So इसकी वजह से जो inequities है, जो social exclusion है, I mean that's another whole dimension that we have to solve. जो mobility के मसाइल हैं, traffic सिर्फ लाहौर में for example 3 गुना बढ़ी है पिछले 10 सालों में. मोटरसाइकिल 3 गुना बढ़ी हैं पिछले 10 सालों में. जो कार्स हैं 2 गुना बढ़ी हैं पिछले 10 सालों में. And Islamabad I think is also not so different. I remember मेरे नाना लक्ष्मण है वो इस्लामाबाद में होते थे, तो वी कुड नॉट फाइंड नान ऑन द ईद. ये 90s लेट 90s की बात है, अर्ली 90s में इतना वीरान हो जाता था शहर. और आज अगर आप जाएं उसी इस्लामाबाद में तो मुझे लाहौर से कभी कभार ज़्यादा कंजेशन लगती है उधर, खासतौर पर कमर्शियल एरियाज में. सो द प्रॉब्लम्स आर ऑल ओवर.
Environment and health में, so these numbers that I put up in front of you, ये are slightly outdated. लेकिन picture is worth 1,000 words. तो एक ये picture इसी एरिया की है, लेकिन स्मॉग सीजन है, ये रेगुलर सीजन है. ये तो चीज़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इसको मेजर करें तो अभी 2022 की एक रिपोर्ट आई है IQ एयर की, और उसमें अकॉर्डिंग टू देम लाहौर has been the most polluted city in the world in 2022, जिसमें PM 2.5 concentration was on average 97 micrograms per meter cube, which is 10 times more. ये मैंने किसी और को एक नंबर बताया था, was really shocked. 10 times more than the safe limit that WHO provides. जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू स्टडीज हमारे लाहौरियों के तकरीबन 6 से 7 साल जिंदगी के कम हो जाते हैं. So all of these are problems because जो हमारे शहरों के मसाइल हैं, they're all interconnected. And the case that I want to build up a little bit here is that the 21st century tech, data and AI, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये है क्या? They can serve as crucial enablers for something called informed decision making for sustainable development as well as management of cities. तो data science और क्योंकि AI का जो keyword है हमने इस्तेमाल किया in the webinar title as well. So I just want to spend some little time here कि data science क्या है और AI क्या है. So this is a definition that I just looked up from Wikipedia, and data science is an academic field that uses all of these things, जो statistics है, scientific computing है, let's not talk about those. But what's important is these things that I provide in bold. This used to extract knowledge and insights from data. Knowledge and insights from data. और हम थोड़ी सी insights और knowledge जिस तरह किस तरह derive करेंगे data से, I'm going to talk about some use cases, especially in the context of Pakistan. AI on the other hand क्या है? AI is the theory and development of computer systems, and this is from Oxford, by the way, to perform tasks that normally would require human intelligence, right? So इसमें visual perception आ जाती है, कि आप वीडियो को देख के चीजें आइडेंटिफाई कर सका कंप्यूटर सिस्टम, as I'm going to show you, that's AI. Speech recognition आ जाती है और decision making आ जाती है, and all of this would fall under AI. Up the question is कि यार, how is data science and AI related? Are they related, or are they anything that's different? It turns out that you'll be able to find many Venn diagrams. This is one, और ये इसके मुताबिक जो कि बाकी भी आपको जगह में मिलेगा कि AI is actually a sub field of data science. तो अब जो कुछ AI में करते हैं वो एक्चुअली डेटा साइंस का हिस्सा है, लेकिन डेटा साइंस में कुछ ऐसी चीजें आप जरूर करते हैं जो कि AI का हिस्सा नहीं होगा. I mean, that's what it means. So data science is a bigger theme, and AI is one of those, is a subset of that. और इसके बाद मैं इन दोनों को इसलिए थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, डेटा साइंस को और AI को slightly interchangeably, and so उसके nuances हैं, लेकिन nuances मेरे ख्याल में as far as this audience is concerned is not very important. So I would lump them together and say that these two fields are used to inform decisions based on data that we gather. अब सवाल ये है कि I mean, these areas, AI and data science, इसकी hype अभी क्यों बनी? Because ये जो AI की field है, जो deep learning और ये सारी बातें होती हैं, that's actually from the last century. सारे ideas पहले से मौजूद हैं, लेकिन the reason why it's becoming a hype now is that advancement in technology that we've experienced, explosion in technology that we've experienced, जो कि पाकिस्तान में भी हमें नजर आती है, and that's really important. उनमें 3-4 चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की है. एक वो डिजिटलाइजेशन है कि हमारे जितने रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर में भी वो सारे के सारे डिजिटाइज हो रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स डेटा. फिर जो वो डेटा है वो प्रोसेस होने के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, कंप्यूटर चाहिए होते हैं, उनकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इन compute power, and that's also happening in Pakistan. Then there's enhanced connectivity. How is data communicated? And we have 4G as a very it's the decent coverage, especially in the cities, and other forms of connectivity. That's also an enabler. And then there's something called Internet of Things, which are, for the layman, they're just sensors, जो कि हमारे बहुत सारी जगहों, for example, video cameras हैं, हमारे cities में बहुत जगहों पे लगे होंगे.
फॉर एग्जांपल हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज की व्हीकल्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सेंसर्स लगे हैं जो कि पाकिस्तान में लगे हैं 1122 के एम्बुलेंसेज के ऊपर एंड दैट्स कंटिन्यूसली जनरेटिंग डेटा और डेटा if I can feed that into a funnel and that outcomes from that data will come ML, will come AI and will come data driven decision making. So hype इसकी असल में इस वजह से है कि टेक एडवांस किया है if I can summarize technology advance किया है which creates a lots of data and then that data can be processed to derive meaningful insights. And this basically slide just says what I or depicts what I just said. Okay, data-driven discovery and AI can be used to analyze, to estimate, to predict, and to decide. And let's not worry too much क्या ये तीन चार चीजों का मतलब क्या है. Let's इसके बाद थोड़ी सी use cases के बारे में discussion करते हैं. अब city management के अंदर हम how can we use data driven discovery and how can we use AI? I list some use cases, broad use cases before I go into or broad outcomes before I go into the specifics. So it can be used to identify vulnerable populations. It can be used for infrastructure planning and management, to assess the impact of social programs. And all of this can be doable in Pakistan, is doable in Pakistan. Planning for the future sustainability, to analyze crimes and hotspots, unsafe infrastructure, as well as to predict natural disasters, to manage a response and relief, right? So having the ये तमहीद मानने के बाद, I think now it's time कि let's see कि पाकिस्तान के context में how can we use AI in data science. So what I have next is about 4 use cases, and if I run over time, तो मैं उसमें से आखिरी वाला maybe skip कर दूंगा. So here's the use case 1, which is a population density map or socioeconomic map, right? So if I can maybe ask somebody in the audience, मुझे पता है webinar में लोग बोलना पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा, लेकिन I really would like to have that idea कि यार is somebody familiar with what the population, और आपको नजर आ रहे हैं ये actually ये वाली चीज है लाहौर की population density map है. तो पहले हम बात कर लेते हैं ये है क्या और ये सोशो इकोनॉमिक मैप है क्या, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इसको किस तरह जनरेट किया जा सकता है तो और क्यों यूजफुल है, क्यों इसका होना बहुत लाजमी है. सो कोई लेट्स सी इफ समबडी कैन वॉलंटियर. डॉक्टर नासिर जावेद साहब के अलावा कोई भी सवाल पूछ सकता है. सर इसकी थैंक यू वेरी मच सर. पहले तो ये बताएं कि सोशल इकोनॉमिक मैप की शक्ल ही लाहौर की नहीं है. ये लाहौर की नहीं है. सो आई मीन सो डिस्क्लेमर हियर इज कि सोशल इकोनॉमिक मैप मैंने लाहौर का क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मैंने जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस ड्राइव किया. डॉक्टर साहब इसीलिए तो मैंने कहा था आपने नहीं सवाल करना, आपने फिर कर दिया. जी और कोई साइमा आप बात करना चाह रहे हैं? Okay, so sorry sir. So I think we can take the discussion forward. So population density map is this image just represents कि कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, और जहाँ पे ये बेसिकली लाहौर का मैप है, और जहाँ पे आपको जो इमेज है ब्राइट जो डार्क ज़्यादा नज़र आ रहा है उसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर और पर 100 by 100 मीटर पिक्सल, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लोग कम रहते हैं. And that's basically a depiction of how the population is distributed in the city of Lahore. And this actually data is from WorldPop. This is a standard data set that's out there it's available for Lahore. और आपको अगर कोई लाहौर से वाकिफ हो तो उसमें आपको जो है ये नज़र आएगा कि पॉपुलेशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है around the roads as well. So for example, I think this is the Firozpur road और ये मुल्तान रोड यहाँ पे जा रही है. So this is extremely necessary for any planning purposes, whether that be allocation of public services, whether that be deciding on where the public services should be, और इसके अलावा कवरेज एनालिसिस आपने करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पे लगानी है, किन पॉपुलेशन को कवर करिए, किन को नहीं करिए. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सोशो इकोनॉमिक मैप ऑन द अदर हैंड
gives you an idea of how and where the socio-economically high strata के लोग कहाँ पे रहते हैं और जो deprived लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उस तरह के different color coding schemes से आप बता सकते हैं, right? So this is extremely important. So that's something we've talked about. अब how are they created traditionally? अगर मैंने population density map निकालना हो, तो how would I generate something like this? Right? So the way you would do this is the way we typically do this is through the census that we did, for example, in 2007. मेल आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं शायद? मैं सेंसस का ही बोलने लगा था कि जो अभी प्रेजेंट सेंसस चल रहा है, we can use that to generate the population density या distribution जो है. Excellent. और जो सोशो इकोनॉमिक मैप है वो भी उससे सेंसस के थ्रू और सर्वेज के थ्रू फॉर दैट मैटर, जो मैनुअल सर्वेज होते हैं उसके थ्रू किया जा सकते हैं, right? So this is the traditional way of how these maps are created, but they are costly, they're time consuming, and so the question therefore is, can AI or data science or technology help here to give us as an estimate of something that is typically done through surveys, through census. So iske liye I'm going to put up this image here in front of you, and this is a satellite image. This satellite imagery is actually from DHA Lahore. It's not far away from where LUMS is. और मेरा सवाल इसमें ये है कि आप अगर इसको सिर्फ you look at the satellite imagery, could you infer something? I mean, what does your brain tell you? Can you infer something about the population density of this region versus the region outside from the satellite imagery? Small That the जी, Kumail, please go ahead. या देखिए जो building structures हैं per square foot ज़्यादा है within the area, the highlighted area, right? So I would, so as you can clearly see from your visual senses that the building density here in this region is a lot higher than the building density in this region, and this basically would give you an understanding that the population, because they're closely located buildings here, I would guess that this is a high population density region versus the region outside. Okay, so this is an inference that you made from data, and that data comes in the form of an image at the moment. An image, I would say, is actually a data as well, right? And then the next question is, if your eyes can perceive it, right? So this is about perception, right? And there's a perception about humans from human senses. This is where AI would come in, and AI would say कि जी मैं वो काम कर सकता हूँ जो human brain भी काम कर सकता है. And we're now at a level, at a stage where actually we can train computer models to be able to detect these building densities and to be able to trace them out automatically just by looking at an image. And this is where AI comes in. So AI models for building detection would just take in the satellite image from the top, and this is an actual model working on it. और जो उसके ऊपर जो आपको यहाँ पे येलो आउटलाइंस नजर आ रही है, वो AI मॉडल ने बताया कि यहाँ पे ये बिल्डिंग नजर आ रही है, without really any human intervention, and the AI model does it automatically for you. और उसकी बिना पे आप बता सकते हैं घर कहाँ पे हैं, घर किस तरह एक्सपैंड किए, सिटीज किस तरह एक्सपैंड किए. Just to give you an idea, this is DHA phase 5. This is DHA phase 5 in Lahore in 2010. And this is DHA phase 5 in 2020. And the AI model has given us these predictions कि घर कहाँ पे बने, किस वक्त बने, just by detecting it automatically. Now, so this AI model could therefore be used to try to predict what the population densities are at different parts in the city, different regions of the city. I can ask you the same question again about the same image and say कि अच्छा अब आप ये दोबारा इसको देखें, क्या आप इसकी income levels की special distribution को बता सकते हैं, कुछ या नहीं बता सकते हैं? Right? So it looks somebody Ifat in the chat mod, and anybody can feel free to type their comments or answers in the chat box as well. So Ifat already points out कि they are haphazard too. जो buildings यहाँ पे हैं, they are haphazard too, as opposed to the buildings outside. और जो haphazard इलाके हैं,
वो हमारी अपनी एक experiences, human experiences that we know कि haphazard इलाके are low income areas as Abdul Samad points out as well. And this is actually true. So ये एक है ये this is a pind basically is a चड़क गांव है जो DHA के right in the heart of DHA is there near Ghazi Road. And we know कि वहाँ पे जो income levels हैं are on average going to be smaller or lower than the income levels outside. So then therefore if your brain can tell you this, so AI can be trained to tell you this as well, right? So let me put up another data point here. So this is once again from data. This is publicly available. ये मैं अपने students को भी दिखाता हूँ जो freshman के class के आते हैं. All I did was I just went on Google and searched Gloria Jean's Coffee in Lahore. And these are the locations. I should have done this for Islamabad, by the way, लेकिन Islamabad सारा का सारा एक बड़ा monolithic सा किस्म का area है. Lahore is a lot different, जहाँ पे inequities मेरे ख्याल में ज़्यादा है. So these are the locations of Gloria Jeans in the city of Lahore. There are many here. The densities here is quite high. And this turns out to be actually DHA. ये DHA का area है. ये गुलबर्ग का area है, Model Town का area है, which once again is socio-economically is a high income. Ye Valencia hai, which is once again a high housing society. This is Beria, there's another one, but there's none here. और अगर कोई लाहौर से familiar हो, तो ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है जहाँ पे कोई Gloria Jeans नहीं है, that's actually the actual Lahore. That's in fact the old Lahore, जो असल शहर है, वहाँ पे कोई Gloria Jeans नहीं है. So the point is कि just by अभी Gloria Jeans की location नजर आई, लेकिन कहीं explicitly आपको ये नहीं बता रहा कि income levels क्या हैं, किधर हैं. But that information is implicit, which can be extracted through something called data science, through something called AI. Because we know कि जहाँ पे Gloria Jeans की density ज़्यादा है, वो pop-up ही वहाँ पे होते हैं जहाँ पे people can afford buying a cup of coffee at Gloria Jeans. Which I don't like to, by the way, because it's overpriced. So the point once again is कि एक implicitly एक information आपको नजर आ रही है यहाँ पे income level के बारे में, जो कि otherwise explicitly कहीं भी नहीं है, but the field of data science, the field of AI could be used to extract that hidden information from this. And these are called points of interest, by the way. And we could extract other points of interest. Utility stores कहाँ पे? All of that information is publicly available for big cities on crowdsourced platforms. And so you can use that. And let me put up another question here. अगर मुझे हर घर का लाहौर में, for instance, meter level readings पता चल रहा है कि बिजली की consumption कितनी होती है over the years, can I use that to determine the number of people living in that household, or estimate the number of people living in that household, and the socioeconomic status of that household? And the answer to that is yes. So socioeconomic status के साथ निकालूंगा. जी अजवा. So I had a question कि how do you train the model to detect these things? क्योंकि उसके लिए उनको कोई एक evidence base which would be a data set जो कि like data set नहीं चाहिए होगा. and पाकिस्तान में generally ये मसला नहीं होता कि हमारे पास historical data set कम होता है. बिल्कुल, जो डेटा सेट कम होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है. और जो ये आपको मैं डेटा जो दिखा रहा हूँ ये क्राउडसोर्स प्लेटफॉर्म से निकाला गया. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल है या नहीं है, उसमें आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा. And then the challenge really is to work with that small amounts of data to train your model. And that's a challenge which is solvable. I think that's solvable, and we're working with that as well. Right, sorry, so, but अगर time हो आपके पास तो थोड़ा सा elaborate कर सकेंगे कि how is it solvable? So yeah, अब ये AI के हम अंदर चले जाएंगे. उसमें data centric AI कहलाती है कोई चीज जिसमें आपको डेटा को इंजीनियर करना पड़ता है ताकि आपको AI मॉडल जो है कम डेटा के ऊपर ट्रेन हो जाए और अच्छा ट्रेन हो जाए. But that means that the data has to be really good. On the other hand, there's also called unsupervised learning, जिसमें आप clustering करते हैं और
that's another ball game altogether. Well, maybe towards the end we can talk about that as well, I think. ठीक है जी? So, all right. मेरा सवाल था बिजली वाला, and many people said yes to that. And the question is how can I determine or estimate the socioeconomic status of people living in a household if I just have the yearly consumption data of their electricity? Any guesses? All right. So you can assume that as a percentage of the total spend, and then extrapolate to their actual income. Okay, so that's one way. Excellent, right? So I can just compute the average and see कि जी average से नीचे कौन है और average से ऊपर कौन है. And this is data science. So this is data science. जी. I think the cost of electricity होगी for that individual household, that will also give an idea about the income of that. बिल्कुल. And I think इससे पहला वाला भी उस्मान ने भी यही बोला कि average consumption of the surroundings and take a ratio of that. But there's lots more that you could do if you have a yearly consumption. आप जो summer months और winter months का comparison ले लें और उनका ratio ले लें, उससे कुछ मुझे पता चलेगा? Air conditioning usage, so richer families will be using more conditioners. Excellent. So in case summer. Great, right? So if I can just take the ratio of the bill in the summer months versus that in the winter months, that will give me an idea of the electricity consumption because of air conditioning use. And air conditioning जहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे उसके बारे में idea हो जाएगा. And then the question is कि ये data exist करता है या नहीं करता? And of course exist करता है. सारा का सारा digitized है. And Lesco, for instance, would have this all of this data with them. It's just a matter of making use of that data to come up with these estimates that I'm talking about. और वो geotagged भी है, by the way. Addresses तो हैं at the very least, which can be geotagged, right? So the point is कि बहुत सारे data sets पाकिस्तान में भी exist करते हैं जिनकी मदद से we can come up with these estimates. And this is what I just summarized in this slide. You can use data sets such as satellite imagery, Pakistan के लिए exist करती है. You can use data sets which point points of interest. These are also available on crowdsourced platforms. You can do surveys जो कहीं ना कहीं sparsely आप कर सकते हैं, as well as electricity consumption and lots of other things. For example, road densities कहाँ पे ज़्यादा हैं, किस किस्म road widths कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, to build up these population density maps and socioeconomic maps, right? So this is how data science can help, right? So this was use case one, and I'm just touched the tip of the iceberg. There's a lot more that I can say about that. And Naveed, I think we're quite low on time, तो मुझे शायद हो सकता है 2 ही cases मिले discuss करने के. बिल्कुल ठीक है. आप public transport वाला interesting है, जरा बस उसको कर लें तो थोड़ा फिर हम question and answer में enter होते हैं. कौन सा वाला कर लूं? Public transport wala is good. Right, so let's do this, and then I think we can take. और generally mobility पे भी अगर आप overall भी बात कर सकें तो अच्छा. Okay, so ये public transport coverage की बात है, right? So this once again is the city of Lahore. My apologies कि मेरे सारी case studies अगर लाहौर के ऊपर हैं. That's because we're living in Lahore and consciously made a decision कि let's just focus on Lahore और बाकी सारी चीजों की connectivity के मुतालिक. There is another reason ना कि LUMS जो है उसमें पहले लाहौर है और बाद में यूनिवर्सिटी है. University of Management. तो L जो है वो that represents Lahore. But this could be done for Islamabad as well. The only point is कि इस्लामाबाद में तो इतने points नजर आ रहे हैं वो तो एक भी नहीं नजर नहीं आएगा वहाँ पे. एक और भी वजह है मेरा ख्याल है क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही शहर हैं और actually that's not true. I mean आप फैसलाबाद शायद नहीं गए, वो भी बड़ा अच्छा. चले ये चले एक और डिस्कशन. मैं sarcastically कह रहा था, not actually. वो लाहौर वाले इस्लामाबाद को शहर नहीं मानते थे कुछ अर्सा पहले तक. तो बहरहाल. So this is, I mean, what the points that you see are the public transport stops in the city of Lahore. This is the green line, which is the metro bus. This is the orange line, which is depicted in orange, of course. और बाकी सारे जो blue हैं वो feeder routes हैं, जो
पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑपरेट करती है, ये सारी की सारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी करती है. And you could ask, I mean, somebody has to know कि यार how many people does this serve in terms of how many people can just walk to the stop in 5 minutes. Okay, and this is because 5 minutes of walking is I think a gold standard. Maybe Naveed मुझे इसमें यहाँ पे ज़्यादा बेहतर बताएगा. तो अगर मैंने ये traditionally करना हो तो मैं क्या करूँगा? I mean, this is to do this traditionally is going to be extremely hard. Would you actually count the number of people from every कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 5 मिनट की walking पे भी करेंगे. And of course, you won't do that manually. Here's where data science can help. And the question is how. हमने population density map के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात की थी. ठीक है, हमारे पास रोड नेटवर्क भी अवेलेबल है, लाहौर का बन जाता है, सैटेलाइट इमेजरी भी अवेलेबल है. एंड यू जस्ट से कि 5 मिनट के अंदर मैं हर स्टॉप से कितनी दूर जा सकता हूँ. एंड देयर आर टूल्स अवेलेबल, GIS tools available that would allow you to do that. And then you just count the number of people based on the population density map that I just found out earlier, just talked about earlier. So this is one of the results. Lahore के अंदर अगर मैं 5 मिनट की walking के अंदर देखूं, so there are only 15% of Lahore's population can actually access a public transport stop in 5 minutes of walking. That's not a whole lot. That's actually very, very low. Islamabad से काफी शायद ज़्यादा होगा. I'm assuming 15%. Like, nevertheless, I mean, this is much far away from what we really want it to be. अगर मैं 10 मिनट की वॉक कर लूं तो 30% पे आ जाता है ये कवरेज. अगर मैं 15 मिनट की वॉक कर लूं तब भी this is only 40% of Lahore's population. And all of this analysis could therefore now be done. So the point I'm trying to make here, ये सारा के सारा analysis है, this can be done with the help of data science, with the help of technology, with the help of AI as well, because AI feeds into creating that population density map, right? फिर अगला सवाल है कि मैंने एनालिसिस ये कर लिया, ऐसा करूंगा क्या मैं? I mean, how is this going to be beneficial for city management? Make new bus routes, feeder routes. Right, bus routes. शाहजहां साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से, if I may ask? कहाँ से ताल्लुक है? मैं उकाड़ा में पैदा हुआ था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहा हूँ, पेशावर में रहा हूँ. कहाँ से मेरा प्रोफेशनली आपका ताल्लुक कहाँ से? That's what I meant. I'm an entrepreneur. Okay, entrepreneur. All right, great. So you can use this to make decisions basically, and inform decision making. Or immediately you can actually identify where the coverage holes are. So this is one great coverage hole. This is actually where I live. I would love to have access to public transport within 5 minutes of walking, लेकिन I don't. And you can use this information, a lot of other information जो कि यहाँ पे analysis है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और ना मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा कि attracting points कौन से हैं, कहाँ से लोग जाते हैं, कहाँ से निकलते हैं, पैरा ट्रांजिट राउट्स कहाँ पे चलते हैं, और उसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एडॉप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑल ऑफ दोस दैट डेटा कैन फीड इनटू black boxes, with the data science black boxes, to make these decisions, to make these informed decisions, if you will. Okay, so this was use case 2. एक जो है road safety वाला है. I think I may skip this, Naveed, if you allow me, or maybe right. So you can go through briefly, और वैसे भी जो लोग question करना चाहते हैं, if you can raise hand, तो हम अभी question and answer discussion भी साथ साथ करते जाएंगे, और meanwhile आप explain करते जाएं. Right. So अब जो ये road safety वाला किस्सा है, वो ये है कि जो पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, all of that has gone digital. Digital in the sense कि whenever they serve a road traffic crash, they will actually log where the accident took place. They would also log the cause for that accident. They would also digitally log the time it took for the ambulances to get there. They would also log कि कितनी देर उनको लगी उसको सर्विस करने में, and they would also log कि उसकी आउटकम क्या थी, और कौन से vehicles involved. So all of that data is now in digital form.
and that can be processed to derive meaningful insights from it. So one of those meaningful insights is here that you see on your screen. These are the top 5 road traffic crash black spots in the city of Lahore. And this is based on the category of where the high severity accidents took place and where the deaths took place. These are in orange. Where the hotspot was, the black spot was categorized under this motorcycle. Kahan motorcycles ke accidents zyada hue. At the same time, we also found out from that data that the number of pedestrians hai, wo वैसे तो relatively कम है compared to the motorcycles involved. Lekin when they're involved in an accident, the proportion of deaths and the proportion of severe injury is a lot higher, which is understandable. I think which makes sense. और वो कहाँ पे हैं? They're in purple here. So for example, this is Kenchi जो area यहाँ पे pedestrian incidents उतने ज़्यादा नहीं है जितने for example ठोकर न्याज़ बेग पे हैं, which is where the Daewoo stop is, by the way. Now all of this was there, you know, but कहीं explicitly और लेकिन implicitly था, explicitly कहीं भी नहीं था. And this was derived from data and data science की मदद से, and these were identified. अब इसके ऊपर क्या हो सकता है? इसके ऊपर ये हो सकता है कि then we could conduct the safety audits here. And we've actually done that. We've written to 1122 as well. We're writing to 1122 as well, identifying कि ये वजूहात हैं we think जिसकी वजह से यहाँ पे accidents हो रहे हैं, and somebody needs to take action on these aspects. So this is what you could do with data once again. And moreover, you can make informed decisions with this data. For instance, ये once again data है जो ये आपको बताता है 8 मिनट के अंदर एम्बुलेंस कवरेज कहाँ पे पहुंच सकती है लाहौर में, जहाँ पे उनकी लोकेशंस मौजूद हैं. And we, for example, this is a coverage hole here. I mean, 8 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं पहुंच सकती एम्बुलेंस. If there's an accident here, they would not be able to reach it. And then you can also make optimization कैसे करनी है कि ambulances कहाँ पे placed होने चाहिए so as to minimize the response time. So one of the other things that actually यहाँ पे लिखा नहीं, what we found out from that data is कि the accidents in which the deaths took place had on average a higher response time compared to where they just needed first aid, right? So deaths के case में average response time ज़्यादा था. I mean, I'm not saying this one is a consequence of the other. I'm just saying they're correlated. So हमारे area में we have to be very, very careful and differentiate between causation and correlation. Again, that's a statistic that does say something. And so I can take the question afterwards, where I'm almost done. So urban mobility का जो paradigm है, अब that's a use case 4. Or I mean, so the new paradigm है requires कि हमारी vehicle centric mobility ना हो, people centric mobility हो, where mobility is beyond just people moving from one place to the other, but rather availability of basic resources, basic services. तो अगर आपको for example grocery चाहिए, अगर grocery आपके घर पे आ जाती है, तो फिर you don't need to go to the grocery store. So actually the purpose of that mobility that you or the trip that you take to the grocery store is to get grocery. So असल में मकसद ये है, अक्सर मकसद जो है गाड़ी चलाना नहीं है उधर पहुंचने के लिए. So अब इसको किस तरह help कर सकते हैं, ये थोड़ी सी चीजें I can say a little bit about it. This can be done through digital traces. We all of us have smartphones, and using that data from smartphones, people have shown that there's so much that you can derive about how people move in the city, how people work in the city. For instance, they could identify कि आप घर में किस वक्त उठते हैं, किस वक्त कहाँ पे काम करने जाते हैं, वहाँ से लंच करने के लिए किस रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड उसके बाद डू यू ड्राइव अलोन और डू यू ड्राइव विद समबडी, और कौन सा राउट लेते हैं, शॉपिंग मॉल्स किस वक्त जाते हैं, ऑन एवरेज कारपूल करते हैं या नहीं करते. All of that data, all of that information can be inferred from these digital traces. Now I know इसमें बहुत सारे privacy concerns हैं, privacy issues हैं, but लेकिन पाकिस्तान में सारा data log हो रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, जहाँ से ये चीजें for the good इस्तेमाल की जा सकती हैं. So in order to find out how people move,
where do they go, where do they come from? Typically हम मैनुअल सर्वेस करते हैं. आपने शायद कभी किसी सड़क के किनारे बैठे हुए लोग देखे होंगे येलो जैकेट्स में, जो दे आर एक्चुअली काउंटिंग vehicles moving from one place to the other, कि कितनी गाड़ियां इस इंटरसेक्शन से किस वक्त मूव किया. So that's manual surveys. That's typically how master plans are made as well, or traffic planning if decisions are made. So that's costly, that's time consuming, that requires manual entries. The other way to do this is to use floating car data, and this is what, for example, Google uses. So Google has all of this floating car data, जिसकी मदद से वो रोड नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी मदद से वो expected time of arrival आपको देते हैं. And they have lots of that data which could be used to identify how people move in a city. And the other is to use traffic flow sensors, and this is being done. All of these has been traditionally been done in Pakistan. This data is out there. It just has to be utilized for the good, and the traffic flow sensors are already there as well. इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा. Traffic flow sensor किस तरह के होते हैं? I'm just going to put up this slide, जो कि यहाँ पे AI is in action. So this is a video feed from I think this is from Shaukat Khanam. Just a camera that's on a pull pe laga hua hai, and that the camera is just taking in a video feed, and on that video feed we have an AI model running, and all that AI model does is it identifies the cars. It categorizes the what kind of a vehicle it is. Is that a sedan or a car? Is that a motorcycle? Is that a rickshaw? Is that a pedestrian can do that as well? And all of that is done manually or automatically. And it also, for example, here reads the license plate numbers as well. You can also see here the driver, whether the driver is wearing a seatbelt or not. So all of it is done through an AI model, and one of this system is actually deployed in LUMS. And there's traffic cameras all over. Islamabad में बहुत सारे लगे हुए हैं, जो सेफ सिटी के लगे हुए हैं, लाहौर में लगे हुए हैं सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं. And if you can deploy something like this on this, the traffic mobility patterns जो है यहाँ से निकाले जा सकते हैं आराम से, as long as privacy issues are addressed. So I just wanted to put this up quickly before I conclude. So I think यहाँ पे मैं conclude कर लेता हूँ कि especially with the last one, which is कि जी जो data driven policy, जो ML और AI है, that presents a great opportunity even for a country like Pakistan, जो कि नवीद ने जैसा स्टार्ट किया था, ये कोई बहुत दूर की बातें नहीं है, और ये बहुत कोई एडवांस बातें भी नहीं है. I mean, there are people all over Pakistan who are experts who know how to do this. It's just a matter of collecting them all together, connecting them to the right resources, connecting to the right stakeholders, and implementing this in our cities. So with that, I'll conclude. I always put this slide up to introduce City to you. We're based on LUMS, लेकिन इसके बारे में नवीद ने पहले क्योंकि जिक्र कर दिया, तो I'm just gonna skip over this slide, and यहाँ पे मैं बोलना खत्म करूँगा, और अगर किसी और ने बोलना है, पूछना है कुछ, तो we can have that discussion. Dr. Momin, एक question पहले type होया हुआ है, so let's I think that's interesting question for our understanding as well. So do AI models give level of uncertainty in their analysis? Like while going through a large data set, which we can't manually check, if AI is making a mistake, how would we check that? So AI is never 100% reliable. No AI can be 100% reliable. It always comes with a level of certainty that we try to quantify. So for example, जो आपने building detection का एक module देखा था मेरा, जो हम satellite imagery देखते हैं और उसमें buildings जो हैं detect करने की कोशिश करते हैं, उसमें we have a ground truth as well, which were manually marked, and then जो AI की output है वो हम उसके साथ compare करते हैं कि कितने % of the times it's making the right prediction, and that gives us a number. Okay, if it's 80%, it's 90%. So for example, when we run it on DHA, our accuracy is above 90%, the model that we've designed. But when we run it on Chadar तो वहाँ पे accuracy एकदम से गिर जाती है. So that's one of the challenges जो पाकिस्तान के context में खास तौर पे हमने solve करना है. So yes, so okay, ऊपर चला गया. So yes, uncertainty होती है, and that can be quantified if ground truth is available. ठीक है जी, और कोई लोग कमेंट करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, सजेशन देना चाहें? एक क्वेश्चन है, how much data is sufficient
train any model. बाकी लोग जो है वो हैंड रेस करें, नहीं हैंड रेस करना, बात स्टार्ट करें, ज्यादा लोग नहीं है तो होपफुली इतनी ज्यादा disturbance. So how much data is sufficient to train any model? I mean, I think that's a very generic question. इसका कोई एक I mean straightforward answer नहीं है. जो the more the data, the better it is. I mean that's a rule of thumb. और फिर कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनको डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो डेटा हंग्री होते हैं, और कुछ मॉडल्स होते हैं जो डेटा हंग्री नहीं होते हैं. सो यू हैव टू पिक मेक अ कॉल कि यहाँ पे कौन सा मॉडल मैं चलाऊंगा. So a question है, any advice for those who have just started in data science and have a keen interest in AI for city management? What tools and skills are essential to start Right. their career in this field? Right. So I think उस्मान, सबसे पहले आप पाइथन सीखें, और उसके अलावा आप लीनियर अलजेब्रा सीखें, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा गलती हम ये करते हैं कि हम डायरेक्ट पाइथन पे जाते हैं, उसकी मैथमेटिक्स नहीं समझते. सो अनलेस यू नो द प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, तब तक आप इशू बिल्ड नहीं कर सकते. दैट विल गिव यू अ साउंड फुटिंग ऑन व्हिच यू कैन डिजाइन एवरीथिंग. और फिर प्रोग्रामिंग सीखें, और वी कैन टॉक ऑफलाइन एज वेल. आई कैन गाइड यू टू सम रिसोर्सेज जो हम. आपका क्वेश्चन आपने हैंड. हाँ जी, जिस तरह आपने मेंशन किया था कि इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब का उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स फ्री डिजिटाइज कर लिया है, तो Yeah. पंजाब में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने काफी हद तक अपनी डिजिटाइजेशन कर लिया है, एंड व्हिच डिपार्टमेंट्स आर लैकिंग इन दैट ज्यादातर? सो मैं इसका मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शायद जवाब ना दे सकूं. मे बी नवीद, आप शायद इसको बेहतर बता सकते हैं, राइट? जी अजवा, दोबारा पूछते हैं, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था हसान का अगला के लिए. हाँ, वो पूछ रही हैं कि पंजाब में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, और कौन से ऐसे हैं जो डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं गए. सो डिजिटाइजेशन जो है उसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उनके रिकॉर्ड जो हैं वो गाड़ियों के वो डिजिटाइज हो चुके हैं. होने को लैंड रिकॉर्ड भी उन्होंने काफ़ी सारे किए हुए हैं, लेकिन द इशू इज़ कि ये सारा डेटा जो है वो किसी भी फार्म में पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता. और जहाँ पर कंज्यूमर सर्विसेज जहाँ भी कोई मौजूद हैं तो सारे ऑलमोस्ट डिपेंड्स के हाउ डू वी डिफाइन डिजिटाइजेशन जो है ना. सो डिजिटाइजेशन जो है उसमें अगर हम उसको कहते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड्स उनके पास डिजिटली मौजूद हैं कंप्यूटर में, मशीन में, तो यस दे ऑल हैव. क्या वो इंटीग्रेटेड हैं, क्या वो ये ऑटोमेटिक हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्लॉलेस कितने हैं, ओपन है नहीं है. तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट जो है वो डिपेंड कि हम कितना डीपली उसको देखते हैं. बट अभी ओवर द टाइम जो है सबके पास डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, and most of the time they don't share, most of the time they don't use it actually. So that's जैसे अभी हॉस्पिटल्स हैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में इतने रिच रिसोर्स के ऊपर बैठे होते हैं इन अ वे के जहाँ पे आपने डिजीजेस के एनालिसिस करने हैं, आपने उनकी फैमिली ट्रीज की, हिस्ट्रीज की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी चाहिए, डायग्नोस्टिक कंपनीज को भी चाहिए, ट्रीटमेंट्स के लिए भी चाहिए, डॉक्टर्स को भी चाहिए. लेकिन आई डाउट कि कभी भी पाकिस्तान के मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से कंपाइल हो कि उस पर कोई अच्छी रिसर्च जो है वो इस पर्सपेक्टिव में हुई हो. सो दैट्स वेयर यू नो दे हैव दीज रिकॉर्ड्स डिजिटली, लेकिन दे आर नॉट इन अ फॉर्म के वो कोई शेयर करे उसको. So basically, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जी so Naveed, the government hospitals हैं वो they're lacking in that this digitization, but the private ones, so for example हम जो चुगताई लैब के साथ काम करें डायग्नोस्टिक्स में, and actually एक पेपर हमारा आने वाला है हमारी टीम का, जो कि उन्हीं डायग्नोस्टिक्स डेटा के ऊपर बेस्ड है. तो सम पॉकेट्स हैं थोड़ी थोड़ी. शौकत खानम का जो सारा डिजिटाइज डेटा है, डिजिटाइज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. बाकी लेकिन ये देखें ना पॉपुलेशन का, अगर आप देखें कि पेशेंट जो सर्विस होती है कितने % है इन सब में. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो दैट्स नथिंग एक्चुअली. ओवरऑल पॉपुलेशन का जो अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा. एग्रीड. ट्रेंड्स क्या हैं डिजीजेस में जो है ना. अच्छा, these sensors can be used to see entry exits of cars, to see where majority of the cars are moving to. This could help us understand commercial destinations and economic mobility within a city. Sir, what sort of infrastructure would be required for such a study?
So बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन. I mean the first thing that you said, this is exactly what you could do. How कहाँ से लोग कहाँ पे जाते हैं for work essentially. अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको? अगर विजन बेस्ड करना है तो उसके लिए आपको कैमरास चाहिए, और वो कैमरास काफ़ी लाहौर में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो इंस्टॉल किए थे सेफ सिटी ने, कोई 8,000 कैमरास थे जो इंस्टॉल किए थे. वो हर मेजर जंक्शन पे तो ज़रूर है, हर जगह पे नहीं है, लेकिन आप उसे कुछ ना कुछ एस्टिमेट निकाल सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी. यस आई एग्री. लेकिन अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, आर देयर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज विद पब्लिक डेटा इन पाकिस्तान? हु ओन्स दैट? लाइक द टाइप ऑफ डेटा इज सेफ सिटी प्रॉपर्टी और इज फ्रीली अवेलेबल? जी, इट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल. एक्चुअली सेफ सिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, और उनकी वीडियो कैमरास के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो आर नॉट अलाउड टू गेट देयर वीडियो फीड्स. सो हमारे कहीं सर्वर पे उनकी वीडियो फीड मौजूद नहीं है. इनफैक्ट our team has to go to their premises and work on their servers. तो उसमें डेटा की शेयरिंग के इश्यूज हैं. that's public that's a property of safe city cannot be made public, अभी तक जो हमारा अंदाजा है. लेकिन कहीं ना कहीं ओपन डेटा होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता. पब्लिकली अवेलेबल भी होना चाहिए. So, Dr. Momin, जी. Naveed, can I ask a question? Yeah, sure. So, Dr. Momin, ये बताएं कि देखें, data is the input and decisions are the output, right? Yep. So, और अगर input की side पे, telcos के पास data है, safe city के पास data है, electric utilities के पास data है, और we keep being dependent. नादरा के पास भी डेटा है, सेंसस का probably सबसे ज़्यादा unreliable डेटा होगा सब चीज़ों में, लेकिन वो भी है. So question is कि decisions और उनकी implementation तो बाद का question है, वो तो I think बहुत हम अभी बहुत दूर हैं उस future से, जब हम data driven decisions लेंगे. लेकिन जो input की side है उसमें आपके experience में what is the way to unlock these different data sets and make them useful? Even मतलब LUMS is like a university, it's not a commercial enterprise. वहाँ पे भी I'm sure challenges हैं, तो commercial enterprises को तो और ज़्यादा challenges होंगे. So what is your thought process कि वो data के जो data sets हैं उनको unlock कैसे किया जा सकता है potentially, और क्या experience रहा है आपका? So सबसे पहली बात है कि when you say that we're far off from the data driven decision making, I would slightly tend to disagree with that. कि I mean the pockets में बहुत सारे data driven decisions लिए जा सकते हैं based on localized data that people have. For example, 1122 is one example. सारा का सारा localized है, they don't need input from anybody else. लेकिन जो आपका जो असल सवाल है वो I think is very spot on. And I think for this the government stakeholders need to talk to each other. वो basically that's it. किसी तरीके से वो बात करें आपस में where this could be unlocked. लोगों की थोड़ी सी शायद डेटा के ऊपर जो इनसिक्योरिटीज है ना वो बढ़ जाती हैं, और शायद सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका डेटा अगर किसी और के पास गया तो फिर लोग उसमें से इनएफिशिएंसीज उनकी निकालना शुरू कर देंगे. I think that's a challenge that needs to be overcome somehow. तो इसमें मेरे ख्याल में नवीद इसमें शायद बेहतर ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से. मैं तो टेक वाला बंदा हूँ, तो हम इस तरह की बातें नवीद से ही पूछते हैं वैसे हम भी, तो इसलिए मैं भी नवीद मुश्किल बात मेरी तरफ भेज देते हैं और सारे आसान सवाल जो आप देते रहते हैं. तो हम भी आपसे ही पूछते हैं यार जब ये चीज़ें. So yes, that is an issue. अभी एक गवर्नमेंट जो है वो AI पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रही है. I've been part of that कमेटी जिसको रिव्यू कर रहे हैं. एंड अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इन पॉलिसी के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अपना डेटा शेयर करें. डेटा गवर्नेंस के ऊपर भी जो है वो काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, बट स्टिल वी आर फार अवे एक्चुअली उस डेटा को जो है वो शेयर करने के लिए एंड मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा इन अ वे के आपको अगर ये बताएं कि सपोज मोटरवे को इसमें क्या मसला है बताने में कि मोटरवे पे आज दिन में कितनी गाड़ियां गुजरी हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो किस इंटरचेंज से बाहर निकली हैं.
So if someone wants to make sense of it, कोई वहाँ पर investment करना चाहता है, कोई decisions करना चाहता है, तो what's wrong in that? और ये सारा डेटा जो वो डिजिटल बात कर रहे थे, इट्स ऑल डिजिटल डेटा दैट दे हैव, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, तो उनके पास स्टॉल्स हैं, डेटा है, बट वी डोंट नो के व्हाट्स हैपनिंग इन दोज रोड्स और कहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, कितनी जा रही हैं मोटरवे पे। इवन एज ऑफ टुडे अगर नंबर हम जस्ट इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखना चाहें, जो एज अ सिटीजन एवरीवन हैज अ राइट टू सी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा है, तो उस पे व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट? Naveed, a question कि let's say that I mean we don't probably, but let's say we had a city government और वो city government ये mandate करे as a part of its policy या regulation के electricity utility भी अपना data share करेगी उन city government के साथ, telcos जो है वो भी अपना data share करेंगी और भी जो भी चीजें across the city काम करती हैं, वो सब ने अपना डेटा एक सेंट्रल डिपॉजिटरी बिल्ड होगी और उसमें शेयर करेंगे। तो इज इट पॉसिबल पोटेंशियली टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मैंडेट या वो पॉसिबल ही नहीं है? तो ये आईटी मिनिस्ट्री ना यही कोशिश कर रही है जो आप कह रहे हैं ना, तो वो डेटा सेंटर एक बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जहाँ पर डेटा शेयर करे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मसलन आपने कहा है ना, अच्छा लेट्स सपोज आप एक लॉ भी बना देते हैं कि सारे गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंट्स इसके साथ शेयर करें। अच्छा, अब क्या होगा, जो टेलकोज हैं जितनी भी, दे आर गवर्न्ड बाय वो जो पीटीए का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, तो पीटीए जो है वो उनके ऊपर बहुत सख्त जो है वो है, एंड दैट इज जेन्युइन एक्चुअली। वो प्राइवेट डेटा इस तरह का है टेलकोस का कि जो दैट कैन नॉट बी शेयर्ड। सो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो डेटा है वो उन टेलकोस कंपनीज के सर्वर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर बाहर जाना चाहिए तो किस फॉर्म में जा सकता है। उसके ऊपर अगर कोई एनालिसिस भी ऑपरेट होना है तो वो जैज के सर्वर्स पे होगा, वो किसी और पे नहीं होगा, टेलीनॉर से किसी के ऊपर भी जो है ना। तो इसी तरह जो है वो मतलब ये लाज बनाया तो जा सकता है, लेकिन अगर ना भी एक जगह पे शेयर करें ना, अगर सारे इसको जो है वो पर्टिकुलरली जो है जो डेटा पब्लिकली जा सकता है उसको तो देना स्टार्ट करें ना। बट किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना, व्हाई शुड दे शेयर? अगर नहीं शेयर कर रहे तो फिर भी तो कोई मसला नहीं ना हो रहा, everything is going fine without sharing। तो मतलब that's a very deep rooted problem and culture। सर नवीद, एक क्वेश्चन किया, जैसे आपने कहा कि टेलको जो है वो प्राइवेट डेटा है, पीटीए की रेगुलेशंस हैं एंड सो ऑन, लेकिन उसमें भी रेगुलेशन ये तो नहीं कहेगी कि एनोनिमाइज डेटा नहीं शेयर कर सकते लोगों की, मतलब वो अगर हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई ना कर सकें और नंबर का भी ना पता चले तो आई डोंट थिंक कि उसमें ये तो हो सकता है कि अच्छा किस तरह की प्राइवेसी को इश्यूज को एड्रेस करके ये फॉर्म में डेटा जो है शेयर किया जा सकता है। तो वो उनके लिए बिजनेस मॉडल होगा। दे आर वर्किंग ऑन दैट, सम ऑफ द टेलकोस दे आर ऑलरेडी सेलिंग दैट डेटा इन दैट फॉर्म। सो इट्स नॉट कमिंग फ्री एक्चुअली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव डेटा राइट नाउ। कुछ बिजनेसेस उनसे परचेज कर रहे हैं जिस तरह का आप डेटा बता रहे हैं, बट इट्स नॉट पब्लिकली एंड इट कैंट बी, आई डोंट थिंक इट कैन बी शेयर्ड पब्लिकली विद एनीवन कि भैया आप ये डेटा ले लें। So Navi, just to add this, we actually have an agreement signed with Jazz on trying to use his telco data for mobility patterns. लेकिन अप फ्रंट हमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जी डेटा किसी भी सूरत जो है हमारे सर्वर से बाहर नहीं जा सकता और ना हम आपको अपने सर्वर्स का एक्सेस दे सकते हैं बिकॉज ऑफ पीटीए रेगुलेशंस। एंड वी एग्जैक्टली आस्क्ड, शाहजहां ने भी क्वेश्चन पूछा कि एनोनिमाइज डेटा देने में क्या हर्ज है? सारी दुनिया में एनोनिमाइज डेटा रिसर्चर्स को मिलता है एंड दे वर स्टिल वेरी रिलक्टेंट saying कि पीटीए की रेगुलेशंस हम, I mean we don't want to put a beehive है उसको नहीं हम करना चाहते, पोक नहीं करना चाहते। लेकिन having said this, I found out from several people जिन्होंने वो actually bought that data, so I don't know कि वहाँ पे फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ bee's nest। World Bank for instance does use that data, somebody was telling me in Karachi they use it। जी, I have a question। जी कुमेल। अच्छा, मैंने बात करनी थी अभी जो रिसेंटली सेंसस हो रहा है, तो जब मेरे घर सेंसस हुआ था, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इन्फॉर्मेशन के घर में कितने मेंबर्स हैं, दे आल्सो आस्क्ड कि आपके घर में वाटर का फिल्टर लगा है कि नहीं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी वो कह रही थी कि लाहौर में मोस्टली पीपल डोंट यूज़ देयर टैप वाटर, यूजुअली जिनके पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का एक्सेस होता है वो यूज़ करते हैं या बाहर से खरीदते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन से वो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डिराइव, नादरा या जो सेंसस कलेक्ट कर रहे हैं लोग? So
नवीद आपकी तरफ है मेरे ख्याल में क्वेश्चन। जी दोबारा बताइएगा। वो मैं वो क्वेश्चन नीचे ये है पकड़ कि रहा था। जो जो सेंसस का डेटा है उसमें जब वो उनके पास आए थे, सेंसस की एक टीम आई थी, तो दे आस्क्ड कि आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यूज करें नहीं करें, वाटर फिल्टर मुझे लगा नहीं पता आपके कि नहीं। अभी किसी को पता होगा अभी वाला जो सर्वे है सेंसस का, उसमें ये क्वेश्चन शामिल है या नहीं शामिल है। आई हैव नॉट सीन दैट फॉर्म एक्चुअली। किसी और ने अगर देखा है तो बता दें अभी वाले सेंसस में ये है क्वेश्चन के नहीं। No, my question is कि इस वाटर फिल्ट्रेशन के पॉइंट से व्हाट इज द इंफॉर्मेशन जो वो डिराइव कर रहे हैं, वो उनको कैसे मदद करेगी नादरा को ये सेंसस में? सेंसस जो है वो पीबीएस करता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जनरली जो है वो इंटरेस्ट होगी कि पॉपुलेशन के बारे में जो है वो पानी किस तरह का यूज कर रहे हैं और कितनी एक्सेस है। तो दैट इज इन एनी केस हम जो सर्वे करते हैं, जो मिक्स का भी सर्वे होता है और जो पीएसएलएम के भी सर्वे होते हैं, उससे मतलब कि पानी का, डिजीजेस का, ये सारी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं कि आपके बच्चों को कुछ हिस्से में जो है, जैसे मिक्स वाले में क्वेश्चन पूछते हैं कि डायरिया तो नहीं हुआ पिछले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, तो और कोई इस तरह की डिजीज कौन सी को हुई है। तो वो दैट्स जनरली फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी मेकिंग टू अंडरस्टैंड के वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ड्रिंकिंग क्वालिटी क्या है। तो दैट्स आई थिंक जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस, पॉलिसी पर्पसेस, एंड ऑब्वियसली दैट डेटा शुड बी कलेक्टेड इन एनी केस। वाटर जो है इससे बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होना चाहिए पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। अभी रियलाइजेशन हो रही है कि वाटर रेगुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रेंथन होने चाहिए। तो पाकिस्तान में तो अभी है ही नहीं है, तो आई थिंक इट्स मच मोर इससे जाने की जरूरत। जी और कोई क्वेश्चन? कोई, मैं ये पढ़ रहा था नीचे, किसी का तो नहीं अच्छा किसी ने लिखा वो परहैप्स नेस्ले वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, या दैट्स स्मार्ट एआई मूव है ये। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। मेरे ख्याल में जी वकारुल हसन आप काइंडली। तो लास्ट 2 जी क्वेश्चन सर। जी, अगर वकार के बाद किसी का है तो हैंड रेस करें, अदरवाइज विल कंक्लूड इट हियर। वकारुल हसन आप बोलिए। यस सर। सर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं चूंकि अभी एमफिल कर रहा हूँ, तो मैं इंटर्नशिप करता रहा हूँ कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से। तो वहाँ इसी सिलसिले में मैं पीडीडब्ल्यूपी मीटिंग्स में भी 1-2 दफा गया हूँ। तो वहाँ पे जो सिटीज के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, उनमें अभी तक किसी को मॉडर्न सिटीज या बिग सिटीज या मॉडर्न मैनेजमेंट सिटीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एलडीए के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। स्टिल दे आर प्रेजेंटिंग प्रपोजल्स ऑन फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस एंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर। हालांकि दुनिया इससे वापस आ रही है सिग्नल फ्री कॉरिडोर से दोबारा क्लोज कॉरिडोर की तरफ, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स और ये हाई स्पीड के काबिल बन है। तो उनसे बात वहां पे बैठे हुए मेंबर्स कुछ पूछते भी थे कि आपके पास कोई प्लान है, कोई मास्टर प्लान है, तो उनका जवाब एलडीए की तरफ से कुछ नहीं था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन हो रही है गवर्नमेंट में, लेकिन ये प्रोसेस क्यों स्लो है? क्यों ये ब्यूरोक्रेसी एक हर्डल क्रिएट कर रही है, या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एआई को यूज करके तो डिसीजन मेकिंग कर सके? थैंक यू सर। सो ये सारे सवाल नवीद आपकी तरफ ही हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सो जो आप कह रहे हैं वकार, ये तो बहुत बड़ी जिद्दोजहद है जो करने की ज़रूरत है। एंड दैट जिद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियलाइजेशन अभी सिटी मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन भी इमर्ज नहीं हुई। और जो रीजनल हम बात कर रहे थे डेटा ड्रिवन डिसीजंस के, सपोज मोबिलिटी, आई डोंट नो कि मास्टर प्लान कहना है या क्या कहना है उसको, बट मोबिलिटी पैटर्न्स जो हैं वो, और मोबिलिटी ट्रेंड्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरह के होने चाहिए, और अल्टीमेटली जो हमारी जो व्हीकलर जो मूवमेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये वो सारे डिसीजंस हैं जिनके ऊपर बड़ी डेटा की बेस के ऊपर गवर्नमेंट सिर्फ डेटा की बेस पे नहीं है, उससे ज़्यादा सिटीजन्स को मूवमेंट्स चलानी पड़ेंगी और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को उस तरफ लाने के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। एंड उसमें जो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कैसे जो हैं वो खुद अंडरस्टैंड करें, जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, हाउ कैन दे जनरेट एविडेंस, हाउ कैन दे डू एडवोकेसी। और गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिस हद तक ये अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, तो आई थिंक वी शुड डू दैट।
बाकी क्यों नहीं है वो फिर एक लंबी जो है वो स्टडी होगी, बट ऑब्वियसली दैट्स नो, यू आर राइट कि वो तो नहीं हो रहा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पिक एंड चूज होता है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ you know well organized study on city management या mobility pattern. Mobility itself, जैसे डॉक्टर मोमिन कह रहे थे कि वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इज कि हाउ टू मूव कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हाउ यू नो यू कैन रिड्यूस दैट टाइम. सो मोबिलिटी मीन जहाँ गोल ये नहीं है, आउटकम ये नहीं है कि मूविंग पीपल एंड गुड्स, तो जब वो मूविंग पीपल एंड गुड्स गोल होगा तो देन वी विल आल्सो look into this problem as a mobility problem. So right now we look into this as a problem of car congestion. We look into this problem as a car speed. So this is where मतलब मैं अक्सर सब लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ कि ये पेशावर में जिन लोगों को पता है वो जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है हो जाती है, और मेट्रो के बाद थोड़ी स्क्वीज हुई यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और वहाँ पर रश लग जाता है. तो अक्सर मुझे वो केपी गवर्नमेंट में एक दफ़ा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वालों ने अप्रोच किया, तो कहते हैं आप बताएं इसका क्या करें. तो मैंने कहा कितनी गाड़ियां आती हैं, कितनी जाती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक का रश? तो वो कहते हैं ये तो हमने कभी कैलकुलेट नहीं की. तो फिर मैंने कहा आप जिसको रश कहते हैं वो रश है भी या नहीं है. तो इज इट ओके फॉर अ कार टू यू नो टू बी स्टक एट अ सिग्नल फॉर 10 मिनट्स और नॉट? तो वो डिटर्मिन हमने करना है कि क्या हमने कार को 10 मिनट रोकना है और उसके बदले में हम जो है 500 लोग उतनी देर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हम उनकी मोबिलिटी दे देते हैं. तो देन वी नीड टू हैव दीज ट्रेड ऑफ्स ना. वो ट्रेड ऑफ्स डेटा से आती हैं. अगर हम ट्रैफिक का रश कहते हैं तो वो ट्रैफिक जो है जैसे पेशावर में है, तो वो ट्रैफिक जो है कहाँ से आ रही है, कितनी पेशावर के अंदर से है, कितनी मर्दान से है, कितनी चारसद्दा से है, कितनी कोहाट से है. यू नो पेशावर सारा सेंट्रल रीजन अभी वेल कनेक्टेड हो गया हुआ है मोटरवेज और इस सारे उसकी वजह से. तो पीपल डू डेली कम्यूट्स जो है इन नियर नेबरिंग सिटीज से जो है ना, मर्दान, चारसद्दा, ये जो है नौशहरा. सो दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वहां से आ रहे हैं तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको हमें देखना पड़ेगा, इंटरनली आ रहे हैं तो हमें क्या ट्रेड ऑफ्स हैं उसकी. तो ऑल दीज थिंग्स नीड डेटा एक्चुअली. तो वो मैंने उन्हें बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो कैमरास लगाएं, कंप्यूटर विजन लगाएं, गाड़ियों को कैलकुलेट करें एंड देन लेट्स इट. लेकिन वो कहते हैं नहीं ये बहुत लंबी बात आप बता रहे हैं, कोई अभी बताएं सोल्यूशन जो है ना. तो वो फिर मैं उन्हें कहता हूँ अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ही बताएंगे, यू टर्न जिधर जिधर बनाना है वो बना देंगे आपको, बस उससे ज्यादा और कोई प्लानिंग नहीं हो सकती. जी बिलाल. थैंक यू सर. सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जिस तरह अभी जर्मनी में या यूके में यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ से आप जिस बिजनेस में भी जाना चाहें या बिजनेस करना चाहें तो आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, आप पे करके डेटा खरीद के उसकी बेस पे आप बिजनेस कर लेते हैं सारा कुछ. तो क्या पाकिस्तान में भी इस पे वर्क हो रहा है या इस तरह कोई इदारा है जहाँ से आप डेटा लेके, जैसे माइनिंग होती है या कुछ भी, तो उसके लिए इसमें डिजिटलाइजेशन अभी हो चुकी है या हो रही है, या कोई ऐसा इन फ्यूचर में ऐसे इदारे बन रहे हैं कि जिन पे ये वर्कआउट करें और लोगों को बिजनेस में इन चीज़ों में आसानी हो? सो ये देखें ये बड़ा ये जो डेटा पाकिस्तान में मिलता है ना, ये सर्वेस करते हैं PSLM के, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेस कहते हैं ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत फ्लॉड हैं पाकिस्तान के, एंड जनरली पूरी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्वेस होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है. एक किताब है बड़ी अच्छी, मैं सबको कहता होता हूँ कि वो जरूर पढ़ा करें. इट टेल्स अबाउट अफ्रीकन स्टैटिस्टिकल एजेंसीज, लेकिन दिस अप्लाइज टू कंट्रीज लाइक अस एवरीवेयर एक्चुअली. तो उसका नाम है पुअर नंबर्स. तो एक मार्टिन जर्वन है, एक साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो ही एनालाइजेस these statistical agencies की परफॉर्मेंस अराउंड द वर्ल्ड. तो उसने पुअर नंबर्स एक बुक लिखी हुई है. तो मोस्टली पाकिस्तान के भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट्स ऐसे ही हैं. जो ये जो अच्छी कंपनीज, जो लोकल कंपनीज है ना, उनके पास तो ये लिवरेज नहीं होती, ना पैसे होते हैं इस तरह का डेटा इकट्ठा कर पाने की. वो जिस तरह से अपने सर्वे कर सकते हैं वो करते हैं. जो अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल टाइप की, जो पाकिस्तान से कुछ बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं, तो वो जो है वो लोकल कंसल्टिंग फर्म्स को हायर करती हैं. वो उनके लिए जो है वो कोई कस्टमाइज्ड और बिजनेस इंटेलिजेंस टाइप का नहीं जो एनालिसिस होता, और उस तरह के डेटा इकट्ठा करते हैं. लेकिन जैसे EU मॉनिटर है,
तो जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो डायरेक्ट EU मॉनिटर को देती हैं इस तरह का बिजनेस, और EU मॉनिटर, आई नो मैनी पीपल इन पाकिस्तान हु वर्क फॉर देम एंड देन दे डू। मसलन आज अगर आपको कोई कहे कि अच्छा बताएं इस्लामाबाद में दूध जो है वो कितना बिकता है, तो आप किसी गवर्नमेंट के सर्वे में आप निकाल के दिखाएं, वो आपको टोटल गाय बता देंगी पाकिस्तान में कितनी है, उधर कितनी है, इधर कितनी है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इस्लामाबाद में दूध कितना जो है वो बिकता है डेली। सो दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट को हायर करते हैं एंड दे डू दीस सॉर्ट ऑफ सर्वेज फॉर देम। और भी फार्म में डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जनरली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट्स आर वेरी लिमिटेड, और वो कुछ ज़्यादा यूजफुल बिजनेस के लिए हो नहीं पाते। वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए यूजफुल होते हैं, जिसपे वो 2-3 पेपर पब्लिश करके जर्नल में आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं, फिर कोई एक किसी कंसल्टिंग रिपोर्ट भी लिख सकते हैं किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए। जी हसानुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल डॉक्टर मोमिन से है। सर मैंने पूछना था कि अगर जिस तरह गूगल, क्योंकि मैं ना कुछ दिनों पहले गूगल API ट्राई कर रहा था, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था उससे ना। मैं चाह रहा था कि गूगल मैप्स का जो डेटा होता है उसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी डेटा होता है, तो वो कुछ डेटा पुल, इज दैट पॉसिबल कि हम वो डेटा पुल करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट्स निकाल सकें इधर लाहौर के अंदर? उसमें ना आपको जब गूगल मैप्स API से आपको मूवमेंट नहीं पता चलेगी, उसमें आपको ट्रैवल टाइम्स पता चल जाएंगे। सो गूगल API जो हम भी यूज करते हैं वो दैट डज नॉट गिव यू फ्लोज, यानी वो ये नहीं बताता कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, किस राउट पे गुजर रही हैं, वुड रादर गिव यू द टाइम इट वुड टेक यू टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। वो ट्रैवल टाइम्स देता है, जो कि इनफैक्ट डराइव जो है फ्लो से होता है, लेकिन वो आपको वो पब्लिक नहीं करते, वो एक्सपोज नहीं करते उससे। आप समझ आइए। सो आपको वो फ्लो नहीं फ्लो नहीं बताएंगे, सिर्फ टाइम बताएंगे गूगल API। ओके, तो बेसिकली सर उस पे मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रैफिक सेंसर्स नहीं है, ये जो मैंने पहला सवाल पूछा था, तो could that be an alternative? So what you're saying is it cannot be because उसमें I did not say that. I did not say cannot be. आपको ना कुछ research papers मिल जाएंगे and something we're working on as well, कि अगर मेरे पास सिर्फ travel times available हो ना, और फिर मुझे थोड़ी सी मॉडल्स अवेलेबल हों कि किस किस्म की रोड है, कितनी विड्थ है, तो उससे मैं फ्लोज वापस ना बैक ट्रैक करके एस्टिमेट कर सकता हूँ थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड ट्रूथ चाहिए, तो आपको इस पे ऊपर पेपर मिल जाएंगे, और तो that's something we're trying to work on. ठीक हो गया, थैंक यू सर। चलें जी, मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करते हैं मोमिन साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हो गया, और जो है वो बाकी जो लोग, आप अपनी वेबसाइट बता दें या चैट में लिंक दे दें जो लोग विजिट करना चाहते हैं। जनरली city@lums लिंक्डइन पे ये लिखी हुई है मेरे ख्याल में, city.lums.edu.pk। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख रहा हूँ जी इन द चैट बॉक्स, सो फील फ्री टू सेंड मी एन ईमेल व्हेनेवर यू वांट। अदरवाइज लिंक्डइन पे हम एक्टिव हैं, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए तो somebody will respond। सो बिल्कुल ठीक है जी।